Hi, good afternoon, everybody. Welcome on behalf of Innovation Mission Punjab to another exciting session of the I Am Punjab Masterclass. These are monthly virtual interactions which are conducted by expert domain people who talk about a particular relevant topic about your business. I wanted to take the opportunity to introduce Swati Singh today. She's a marketing digital expert with over 9 years of work experience with startups, small businesses, and large organizations. In addition to having built a bootstrap business from scratch with 20x revenue in 2 years, she has grown in the social media presence of renowned brands like Body Shop India, Vivo South Asia, Color Bar, and so on and so forth. She's also been recognized as the top 30 under 30 leaders of 2022 by the Impact magazine, India's largest marketing and advertising magazine, both digitally and in print as well. Currently, she's working to empower early stage startup founders and solopreneurs to run their marketing campaigns effortlessly, as well as build their businesses. Interestingly, if you're a small business owner, content creator, influencer, wanting to grow your social media presence, but end up spending too much time on deciding what to do, where to do, how much to spend, and rather not able to focus on your business, this is where this class will be helpful. There's a surprise for you in terms of you don't really have to pay in lakhs to an agency to do this. You might as well learn, you know, basics from and the hacks you are have available on the internet for free. And now I will have Sakshi take over the rest of the session, explaining you what all you can do to build efficiencies in terms of digital marketing, what are the growth hacks, the tools, the available platforms, and how can you leverage it for your business. Just between the session, if you have any questions, I will be helping moderating this with all of you. And Swati, over to you. Welcome on behalf of Innovation Mission Punjab. Thank you for doing this. Thank you for curating this. And I'm sure the audience is going to be engaged with what you have. Thank you so much for the great introduction, Supriya. Thank you for the opportunity, Innovation Mission Punjab. I think, I have always wanted to work with startups. I hope I'm audible. Everything's good. You can see me properly. All good? Okay, yes. Great. Thank you everyone who's here with us so far. Like Supriya mentioned, it's very important for young founders and early stage startup founders to understand where all they can bootstrap and where all they can kind of improve their efficiency of working with multiple teams. Even if you don't have like an in-house marketing team, or if you don't have the budget to work with an agency, तो ये सेशन उन सब लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिन्होंने कि अभी रिसेंटली अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आप मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं. बिकॉज अनलाइक जो हमें बताया जाता है नॉर्मली, और अनलाइक पॉपुलर ओपिनियन, you don't need lakhs of rupees to start doing digital marketing. मतलब I work with so many startups who tell me कि नहीं यार अभी तो हम नहीं कर सकते digital marketing because अभी हमारे पास budget नहीं है, our priorities are changed, etc. तो बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हो. सो लेट मी टेक यू थ्रू 5 very simple to use, easy to use tools who can actually help you grow your digital marketing efforts, your social media marketing, without putting in a lot of time, and without basically the help of a lot of team members are actually outsourcing it to an agency. तो early stage के लिए आप ये कर सकते हैं. And then obviously there are stages when you will start feeling कि हाँ अब I need a team or I need an agency to take this forward and I need to get an expert's opinion on something. So वहाँ पे definitely आपको you will have to take someone's help to figure out how to do something. लेकिन the 5 tools that we will actually talk about today, वो कोई भी start कर सकता है. अगर आपका digital marketing में कोई experience नहीं है, कोई background नहीं है, आप तब भी start कर सकते हैं. And we will have I'll try to finish this between another 50 or 55 minutes, and then we will have an half an hour session for you guys to ask me any kind of questions. आपको कोई doubt है, anything like that, right Supriya? So shall we begin? स्वाति, सबके लिए, सब ऑडियंस के लिए एक बार क्लैरिफाई करेंगे, जब आप एक एक टूल के बारे में बात करेंगे तो आप इसको डिस्प्ले भी करेंगे लाइव डेमो फॉर द ऑडियंस? हाँ जी बिल्कुल. तो एक एक टूल जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा. देन आई विल यू थ्रू द लाइव डेमो ऑफ दैट टूल, कैसा दिखता है, हाउ कैन यू यूज इट. बहुत सारी डिटेल्स होती हैं, बट आई विल ट्राई टू टच अपॉन द मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस जिसके साथ आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स.
So we will start with the very basics today. And obviously, if required, we can have multiple, follow-up sessions later, or I can get in touch with you guys later on to understand the details of it. अगर आपको किसी को doubt है या कोई और detail में समझना है कोई particular tool, we can always get in touch later. Let's move forward. Over to you. Sorry, I didn't get that. Can we start? I said, yeah, please. Okay, great. Let's start. I will share my screen. Please let me know if you guys can see it. Is my screen visible? It's visible. Okay, great. Give me a minute to because I also want to see. Okay, great. So, like we said, this is a masterclass and we are calling it Growth Hacks 101. But guys, I hope you can see me, or is it switched off now? We can see you and the screen both, Swati. Okay, brief introduction. That's for 9 years now, and it's not just my job, but it's also my passion, my hobby thing. So I have learned everything that I have learned about tools, about marketing, designing, social media marketing, etc. I have mostly learned on my own, which is the best kind of learning. Going through any kind of details, any kind of courses online, etc. तो ऐसे करके a lot of trial and error later, I've been able to work with a lot of good brands and a lot of startups as well. And I love to interact with startup founders. There are a lot of things that I can help with beyond social media marketing, also like influencer marketing, like Supriya mentioned, any paid marketing efforts, etc. So I love to work startups there. That's why I actually reached out to Innovation Mission Punjab and wanted to volunteer to help startups. Okay, so let's quickly go through our agenda for today. Our agenda for today is that we are going to go through these 5 very easy to use. First tool is an analytics. Google का एक Meta dashboard was previously Facebook, but since Facebook has become Meta now, so Meta dashboard में if you are a business who is registered as a business on Facebook and you have Facebook and Instagram pages running, you can your Facebook and Instagram pages और आप दोनों Facebook और Instagram की insights, अपने content की performance और बहुत सारी चीजें इस एकदम free dashboard पे देख सकते हैं. You don't need to pay anything for it. As long as you have a function of your business, आप उस content post करते हैं. The third tool is Canva, which is available. Swati, sorry, just intervening. This seems to be some voice lag. Could you just repeat again and probably go a bit slow? There seems to be a voice video lagging issue. Okay, we sure. can have one. Let me do one thing. Now I'll just switch over to. Yes, that. Let's see if this is any better. Yeah, I think my video is a little distorted here, so I'll just switch it off for now. But is this better in terms of the voice? Yes, absolutely. Your screen is not visible now. Is it visible now? Yes. Okay, cool. So I'll just go through the tools again. We are going to start with a free tool, Google Trends and Analytics, जो कि Google का एकदम free tool है, like I mentioned. Then we will move on to Meta dashboard. Meta is the parent company of Facebook now. Facebook, Instagram, and WhatsApp collectively have become Meta now. And Meta is also a completely free dashboard for all businesses. आप अपना Facebook, Instagram के सारे post के insights, how your content is performing, and a lot of other things is एकदम free dashboard पे देख सकते हैं. Then we have Canva. Obviously, we are some of us might be well versed with Canva क्योंकि बहुत सारे solopreneurs, marketers who don't have a big social media team, अगर आपके पास designer नहीं है,
ग्राफिक डिजाइनर नहीं है या वीडियो एडिटर नहीं है, तो आप बहुत इजीली कैनवा को यूज करके बहुत सारी चीजें बना सकते हैं. And it's not just for social media graphics. There are a lot of other things that you can do with Canva that I will take you through today. Then we have Wati. Now Wati is, I know it sounds like मेरे नाम में से S हटा दिया. It always makes me smile whenever I'm going through this name. But Wati is a WhatsApp marketing tool, and today we will discuss why WhatsApp marketing is so important. Right, and then we have ChatGPT, जिसके बारे में हम सबने बहुत सुना है, recently काफी popular हुआ है. We will go through how it can help us as a startup, or if you want to start doing marketing of any brand for that matter. तो chat gpt आप कैसे use कर सकते हैं, we will just go through that. Right, all good up till here. So we will move on and we will go to Google Trends. Right, so Google Trends is Google's completely free tool. I hope everyone can see my screen here. Not visible, Swati. Few participants cannot. Okay. Could you just put it up on the other one? Could we have a hands up on people who can see the screen, please? It is now. It's visible now. It's visible now. Okay, great. It's visible now? Yes. Yes, okay. So Google Trends, you can actually use Google Trends to see any detail of who is searching what. तो Google Trends आपको ये बताता है कि Google के ऊपर क्या ट्रेंड कर रहा है, right? So if you want to see कि अगर आप एक particular product को market करना चाहते हैं, or if you want to sell a particular service, how many people are searching for it? फिर उसके बाद गूगल ट्रेंड्स आपको ये बताता है कि विच आर द की लोकेशंस जहाँ पे वो सर्च हो रही है इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री, विच पर्टिकुलर सिटीज जहाँ पे वो सर्च सबसे ज्यादा हो रही है. उसके बाद वो आपको उससे रिलेटेड टॉपिक्स एंड क्वेरीज भी दिखाता है. यू कैन सी कि इस वर्ड से मिलता जुलता और क्या सर्च हो रही है ऑन गूगल. एंड देन ऑब्वियसली इट इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ शेयर ऑफ वॉइस. मैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना चाहूंगी आपको. सो लेट मी जस्ट टेक यू गाइस through the live Google tool here. Okay, so this is Google Trends. I hope everyone can see my screen. Are you using two screens? No, I'm single screen. We have one of the participants mentioning that it's still not visible, though we can see it as a host. Okay. Okay, it's a single screen. Can people let us know if the screen is not visible? Because okay, let's move forward. It's visible for largely people. It is visible. Let's move forward. Okay, great. So this is Google Trends. This is what the dashboard looks like. तो मैं एक example देना चाहूंगी. So a lot of us actually use different kinds of smartphones. तो हम एक स्मार्टफोन का एग्जाम्पल लेके देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन ब्रांड इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उसके उसके लिए सबसे ज्यादा सर्चेस कहाँ पे हो रही है, राइट? सो लेट्स से वी विल पुट इन अ नेम्स, लेट्स से वीवो. ठीक है, तो वीवो इज अ पॉपुलर ब्रांड, सबको पता है. उसके बाद आप यहाँ पे ये देख सकते हैं. सो आई जस्ट टेक यू थ्रू ऑल द फीचर्स ऑफ द पर्टिकुलर डैशबोर्ड, राइट? तो यहाँ पे आपने सर्च टर्म डाली, व्हाट इज इट दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर, दिस इज अ ब्रांड्स नेम, राइट? इंडिया हमारी लोकेशन है, लेकिन आप कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी कंट्री में देख सकते हैं डेटा. देन यू कैन सेलेक्ट कि आपको पास्ट 12 मंथ्स का डेटा देखना है, पास्ट आवर का डेटा देखना है, पास्ट 4 आवर्स, पास्ट डे, पास्ट 7 डेज, एटसेट्रा. उसके बाद आप कैटेगरीज भी सर्च कर सकते हैं, दैट विच पर्टिकुलर कैटेगरी डू यू वांट टू सर्च इन. दो इट्स एडवाइजेबल कि हम ये कैटेगरी फिल्टर ना लगाएं, आपको सारी सर्चेस देखने को मिलेंगी. एंड देन आप ये भी बता सकते हो कि आपको इमेजेस सर्च देखनी है, न्यूज पे ये आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना है, या गूगल या यूट्यूब पे आ रहा है या नहीं देखना है, राइट? सो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद वेब सर्च, जो हमारी नॉर्मल गूगल वेब सर्च होती है. लेट्स से हमने वीवो डाला. अब मुझे ये देखना है कि वीवो ज्यादा पॉपुलर है या ओप्पो ज्यादा पॉपुलर है या वन प्लस ज्यादा पॉपुलर है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो मैंने यहाँ पे नाम डाला ओप्पो.
आप जितने मर्जी चाहे यहाँ पे कंपैरिजंस ऐड कर सकते हैं देखने के लिए कि किस पर्टिकुलर टर्म या किस पर्टिकुलर ब्रांड या प्रोडक्ट का जो नाम है वो ज्यादा सर्च हो रहा है, राइट? देन लेट्स ऐड थर्ड नेम, वन प्लस। ग्रेट। अब हम चौथा डाल देते हैं सैमसंग, राइट? अब हम फिफ्थ डाल देते हैं आईफोन, विच इज यस, ग्रेट। सो ये अब हमको लास्ट 12 महीने का ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आपको ऊपर कलर से पता लग जाएगा कि कौन सी ट्रेंड लाइन कौन से ब्रांड की है। येलो इज वन प्लस, तो वन प्लस काफी नीचे पहुंच गया है, अब हम देख सकते हैं। उसके ऊपर ओप्पो है, फिर वीवो है, उसके बाद आईफोन एंड सैमसंग आर ऑलमोस्ट कंपीटिंग विद ईच अदर, राइट? इसका मतलब ये है कि this is the trend line of the search that people are doing on Google. सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं लोग सैमसंग और आईफोन के बारे में, उसके बाद वीवो के बारे में, उसके बाद ओप्पो, सबसे लास्ट में वन प्लस, ठीक है? अब आपको ये बीच में ना ये पीक दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप इसके ऊपर हवर करोगे तो आप टाइमलाइन देख सकते हो कि अगस्त 28 से लेके सितंबर तक आईफोन के बारे में ज्यादा सर्चेस हुई हैं। व्हाई? बिकॉज आईफोन 14 They लॉन्च got a हुआ new था। launch. Yeah, exactly, because it got launched. So, I think, Supriya, I wanted to ask that it is okay if I ask questions from people and they can answer in between the line. Yes, absolutely. Feel free to ask questions. The chat is open for all the answers as well, and I will help moderate as well. Great, awesome. Right. So thank you for answering the first question, Supriya. We can see कि iPhone के searches सबसे ज़्यादा ऊपर गई हैं in August to September because the new iPhone was launched. So that is why people were searching for it more. अब हम नीचे जाते हैं in the dashboard. Let's see और क्या information Google Trends can give us, right? So let me just try to take this information for one particular brand. I will remove the others just for ease of understanding. सो नाउ वी विल ओनली सी कि वीवो कौन से रीजन्स में सबसे ज्यादा सर्च हो रहा है। सो यू कैन सी दैट 100% ऑफ सर्चेज आर हैपनिंग इन गुजरात। सो दिस इज बेसिकली एन इंडिकेटिव नंबर। यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, 86 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है दैट 100 सर्चेज आर हैपनिंग इन गुजरात एंड 86 सर्चेज आर हैपनिंग इन राजस्थान। इस नंबर को सिर्फ इंडेक्स कर दिया गया है दैट इन कंपैरिजन टू 100 सर्चेज इन गुजरात 86 are happening in Rajasthan, right? So this is just an indicative number. ये absolute number of searches नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि 100 सर्चेस हो रही हैं, आपको सिर्फ कंपैरिजन दिखाने के लिए है। सो वेरी इंटरेस्टिंगली गुजरात में सबसे ज्यादा वीवो के बारे में सर्चेस हुई लास्ट 12 मंथ्स में, देन राजस्थान, देन दादरा एंड नागर हवेली, देन दमन एंड दीव, देन उत्तर प्रदेश। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड, राइट? अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड और क्या टॉपिक्स लोगों ने सर्च किए, रिलेटेड टॉपिक्स, राइट? सो पीपल आर सर्चिंग फॉर अ टेलीफोन हेडसेट, पीपल आर सर्चिंग फॉर इम्पोरिया मोबाइल फोन, शायद इससे रिलेटेड कोई दूसरा ब्रांड है। फिर उसके बाद डूजी X90 मोबाइल फोन, यू नो टैबलेट कंप्यूटर, ओप्पो A57 मोबाइल फोन। अब ओप्पो भी ऑब्वियसली वीवो जैसा सिमिलर ब्रांड है, तो इससे रिलेटेड सर्चेस ये हो रही हैं। फिर उसके बाद इससे रिलेटेड सर्चेस ये भी हो रही हैं that people are looking for this particular Vivo V25 Pro फॉर एग्जाम्पल, उनका शायद रिसेंट फोन लॉन्च हुआ है। फिर Realme के बारे में सर्च हो रही हैं। फिर Vivo Pro कबड्डी सीजन 9, बिकॉज Vivo वाज द स्पॉन्सर ऑफ प्रो कबड्डी सीजन 9, तो उसकी भी सर्चेस हो रही हैं, राइट? तो यहाँ से आप ये सारी रिलेटेड सर्चेस भी देख सकते हैं। अब हम एक और क्विकली एग्जाम्पल देखते हैं जिसमें Swati, before we move on to the next example, आप ये बता पाएंगे कि related queries को लोग कैसे apply कर सकते हैं अपने businesses के लिए? How are these बिल्कुल related queries? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक उसके लिए एक दूसरा एग्जांपल देके बताती हूँ। लेट्स से कि हमको एड रन करनी है, गूगल एड रन करनी है ऑन अ पर्टिकुलर सर्च टॉपिक, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, लेट वी विल से लेट्स से वी वांट टू सेल जैगरी, राइट? बिकॉज जैगरी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, one of our I am Punjab's brands, you know, Jagger cane is very popular with a lot of with the community, so I will just take that example. Let's say we have to take जैगरी एज एन एग्जाम्पल। मैंने सर्च टर्म डाली जैगरी, और मैं देख सकती हूँ लास्ट 12 मंथ्स में, या लेट्स से अगर मेरे को और लंबा ट्रेंड देखना है लास्ट 5 इयर्स में, जैगरी के लिए सर्चेस कब ज्यादा बढ़ी थी,
ठीक है, and अभी what is the trend line, right? So let's say we go through the past 12 months, we can see जैगरी के लिए searches almost उतनी ही हो रही हैं इंडिया में, but जनवरी में और दिसंबर में थोड़ी ज्यादा बढ़ गई हैं. Probably the reason is because winters में जैगरी ज्यादा consume करी जाती है, especially in the northern parts of Punjab, right? तो इसलिए आप देख सकते हैं विंटर मंथ्स में थोड़ी सी बढ़ गई है और गर्मियों में मई जून में कम हो रही थी सर्च. अब हम ये देखते हैं सबसे ज्यादा सर्चेस कहाँ हो रही थी. सबसे ज्यादा सर्चेस हो रही हैं गोवा, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, और इसके आगे बढ़ के और दूसरे सब रीजन्स भी देख सकते हैं. सो इट शोज यू अ टोटल ऑफ 30 to 35 सब रीजन्स जो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा सर्चेस कहाँ पे हो रही हैं. नाउ रिलेटेड क्वेरीज देखते हैं, ठीक है. Can you guess why Mishri Lal is unable to increase his profit? Ab now Mishri Lal probably is a trending topic related to a jaggery brand, right? मुझे भी नहीं पता है ये. It will be very interesting to see this because I'm seeing this for the first time. अगर आप में से किसी को पता है तो please feel free to answer that why is somebody called Mishri Lal related to searches for jaggery? Jagger. Yeah. सो देन वी से, तो ये रिलेटेड इसकी क्वेरीज हैं जो सबसे ज्यादा पॉपुलर रही हैं, राइट. अनदर सेकंड क्वेरी इज आल्सो अबाउट व्हाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट हिज विलेज. मे बी, आई एम गेसिंग, मे बी दिस इज द शार्क टैंक entrepreneur who came to Shark Tank and then people are asking questions on Google, right? That's a very high possibility. देन वी सी के जैगरी के बारे में लोग और क्या सर्च कर रहे हैं, सेमिया पायासम विद जैगरी. तो अब आप, अगर आप एक जैगरी ब्रांड है एंड यू वांट टू सर्च, यू वांट पीपल टू सर्च फॉर योर ब्रांड, यू वांट पीपल टू फाइंड योर ब्रांड, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ब्लॉग लिख सकते हैं, आप इसके ऊपर कंटेंट बना सकते हैं. आप देख सकते हैं पीपल आर सर्चिंग फॉर पायासम विद जैगरी, तो आप पायासम विद जैगरी की रेसिपी दे सकते हैं कि सेमिया पायासम कैसे बन सकता है जैगरी के साथ. आप ये बता सकते हैं पैरिस जैगरी पाउडर. इससे आपको क्या पता लग रहा है, दैट पैरिस ब्रांड is popular with your target audience. People who are looking for jaggery are searching for पैरिस ब्रांड का जैगरी पाउडर. तो हम उनके पेज पे जाके, उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं, व्हाई आर पीपल लुकिंग फॉर देयर ब्रांड, राइट. अब हम नेक्स्ट क्वेरीज पे चलते हैं. Then it again says Jaggery GST rate. I don't know why people are searching for GST on Jaggery. Ruchiana Jaggery powder, probably that is also another brand's name that people are searching for. गुड़ खाने के फायदे, वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप सबसे पहले इस पे कंटेंट बनाना चाहिए आपको, अगर आप जैगरी बेचना चाहते हैं कि जैगरी खाने के फायदे क्या हैं, गुड़ खाने के फायदे क्या हैं, क्योंकि लोग उसको सर्च कर रहे हैं. Then people are searching for organic तत्वा जैगरी पाउडर. Again, it is a very popular brand. तो ऐसे करके there are 2-3 ways, very easy ways जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको अप्लाई करना अपने बिजनेस के लिए. नंबर 1 इज यू कैन गेट टू सी कि कहाँ पे ज्यादा सर्चेस हो रही हैं. फिर आपको अगर एड्स चलाने हैं या अगर आपको कोई इवेंट करना है तो आप उन्हीं एरियाज पे फोकस कर सकते हैं, उन रीजन्स पे फोकस कर सकते हैं. नंबर 2 इज रिलेटेड क्वेरीज को देख के आप उसके रिलेटेड कंटेंट बना सकते हैं, राइट. ब्लॉग बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना सकते हो, फेसबुक पे कंटेंट बना सकते हो, बिकॉज लाइकली अगर लोग गूगल पे ये चीज सर्च कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको कहीं और ये कंटेंट देखने को मिलेगा, दे विल एंगेज विद दैट कंटेंट, उनको अच्छा लगेगा, राइट. एंड द थर्ड वे इज दैट यू कैन सी कि आपके प्रोडक्ट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट ब्रांड्स पॉपुलर कौन से हैं. जैसे इसमें हमको 2-3 ब्रांड्स पता लगे जैगरी के पॉपुलर ब्रांड्स कौन से हैं, पैरीज है, ऑर्गेनिक तत्वा है, एक्सेट्रा. तो आप उन ब्रांड्स को भी जाके फिर एनालाइज कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो दैट व्हाई आर पीपल लुकिंग फॉर दीज पर्टिकुलर ब्रांड्स, राइट. So this is a very interesting, absolutely free to use tool, Google Trends. अगर आपको कोई भी search trend देखना है, अब ये तो हमने web search देखा. I will not go into the details because otherwise it will take a lot of time. But if you guys have any particular questions, आप अपने questions note कर सकते हैं. And towards the end of the session, we can discuss them in detail also, right? अब जैसे यहाँ पे YouTube search भी है, तो आप YouTube search देख के भी बोल सकते हैं that what kind of content people are searching for on YouTube. Right? Especially for content creators or someone who does video blogging and video as a major product, YouTube searches will be very relevant आप सबके लिए, क्योंकि YouTube पे content search different हो सकता है आपके image और overall Google search से. स्वाति, कोई ना कोई सेशन के बीच में हम एग्जांपल भी उठा सकते हैं कि दोनों searches में क्या फर्क होगा, वॉल्यूम्स में फर्क होगा या मेन कीवर्ड्स में भी फर्क हो सकता है इंडस्ट्री वाइज. Absolutely, absolutely.
इंडस्ट्री वाइज फर्क तो हम ऑब्वियसली बता सकते हैं. इफ एनीवन हैज इन द सेशन, इफ एनीवन वांट्स अस टू लुक एट सम पर्टिकुलर कंटेंट, तो सम पर्टिकुलर एक कीवर्ड एक बता सकते रिक्वेस्ट आया है Q&A में कि हेल्थ केयर सर्विसेज रिलेटेड गूगल ट्रेंड्स कैसे ढूंढे, तो कौन सा कीवर्ड होना चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज में जो वो डाल सकते हैं. जैसे आपने जैगरी डाला, वो एक प्रोडक्ट है, नॉट एन इंडस्ट्री, बट हियर दे टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सर्विसेज. सो व्हाट शुड द रेलेवेंट कीवर्ड बी दैट कैन बी लुक्ड इनटू इन टर्म्स ऑफ ट्रेंड्स. हेल्थ केयर सर्विसेज में सबसे पॉपुलर सर्च टर्म दैट पीपल विल बी सर्चिंग फॉर, इंट्यूटिवली बता रही हूँ मैं, वो हो सकता है डॉक्टर नियर मी फॉर एग्जांपल, राइट. अगर मेरे को आई एम लुकिंग फॉर हेल्थ केयर और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, आई विल सर्च फॉर दिस. तो आप देख सकते हो कि इसका जो ट्रेंड है ओवर टाइम वो बढ़ता जा रहा है. अब आप इनसे रिलेटेड क्वेरीज अगर देखें तो अगेन दिस इज वेरी स्ट्रेंज, पीपल आर लुकिंग फॉर डॉक्टर स्ट्रेंज, लेकिन हम उसके आगे बढ़ सकते हैं. सबसे ऊपर है ऑर्थोपेडिक डॉक्टर नियर मी विद फीस, देन पीपल आर सर्चिंग फॉर डायबिटिक डॉक्टर विद मी. तो इसका मतलब ये है कि आप इन पर्टिकुलर सर्चेस को पकड़ के ये देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी के डॉक्टर की सर्चेस ज्यादा सर्च हो रही है, राइट. पीपल आर लुकिंग फॉर ऑर्थोपेडिक्स फर्स्ट, देन डायबिटिक डॉक्टर, देन गाइनो डॉक्टर, देन अगेन ऑर्थो डॉक्टर, अगेन ऑर्थो डॉक्टर, देन पीडियाट्रिशियन. सो ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि सबसे टॉप की कैटेगरीज कौन सी हैं जिनके लिए सर्च हो रही है, एंड देन यू कैन अकॉर्डिंगली रन एड्स और प्रोवाइड सर्विसेज अकॉर्डिंगली. अगर आप कोई पर्टिकुलर रीजन में देखना चाहते हैं तो आप इस रीजन, वहां पे रीजन भी डाल सकते हैं. लेट्स फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालूंगी पंजाब, इंडिया में पंजाब में, ठीक है. तो इंडिया में पंजाब में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा सर्चेस हो रही हैं गोविंदगढ़ में, फिर जीरकपुर में, फिर खरड़ में, फिर साहिबजादा अजीत सिंह नगर में. रिलेटेड क्वेरीज में सबसे ज्यादा लोग मांग रहे हैं पीडियाट्रिशियन. इट इज अ ब्रेकआउट सर्च. ब्रेकआउट मतलब सबसे ज्यादा. It has broken the records of any other thing that people are searching for, right. इसका मतलब पीडियाट्रिशियन की डिमांड सबसे ज्यादा है, उसके बाद गायनोकोलॉजिस्ट की है, उसके बाद क्लिनिक, उसके बाद है ऑर्थो. तो हमको ये 2 बार सर्च करके और पंजाब स्पेसिफिक रीजन डाल के समझ में आ गया दैट द 3 कैटेगरीज दैट पीपल आर सर्चिंग फॉर इन डॉक्टर्स आर पीडियाट्रिशियन, गायनोकोलॉजिस्ट एंड ऑर्थो, राइट. ऐसे ही अगर आप और स्पेसिफिक कीवर्ड्स डालोगे यहाँ पे, यू कैन, ये देखो ट्राई एंड टेस्टिंग का खेल है, यू विल हैव टू कीप trying to understand the trends. आपको you should spend a good half an hour in Google Trends just trying to add keywords, asking questions that you want to, right. अगर आप पूछना चाहते हो कि let's say if you want to maybe see which particular disease are people searching for, तो आप वो भी search कर सकते हो, ठीक है. So I hope this helps. Who had asked the question, I hope this helps. No, it definitely addressed. There are a couple of more doubts, but we'll take it probably the next tool or towards the end of the session. Like for every businesses, जैसे किसी ने पूछा है रियल एस्टेट बिजनेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी यही होता है, ब्रोकर नियर मी, प्रॉपर्टीज नियर मी. अगर आप वो लिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लोग कौन सी रियल एस्टेट फर्म के बारे में बात कर रहे हैं. कई बार कोई एक पर्टिकुलर फर्म का नेम भी ऊपर आ जाता है. और कुछ कीवर्ड्स इतने स्पेसिफिक है, जैसे उन्होंने टाइप किया फ्लैट नियर मी, प्रॉब्ली उसकी कीवर्ड वॉल्यूम इतना छोटा है कि आपको उसके वॉल्यूम नहीं दिखेंगे. राइट, राइट. जैसे हमने बाय प्रॉपर्टीज डाला तो पंजाब में ये आपका स्पेसिफिक लाइन आ गई, लेकिन इसमें इनफ डेटा है ही नहीं. सो मींस इन पंजाब पीपल आर नॉट सर्चिंग फॉर दिस इतना. सो वी कैन वाइडन दिस. अगर आपको इंडिया वाइड ट्रेंड देखना है तो आप इंडिया वाइड देख सकते हो. तो इसमें आपको पता लगेगा प्रॉपर्टीज टू बाय GTA बाय सिटी. Oh God. People are crazy. This is insane. The kind of content people are searching for on Google. Which registration is required by builders, etc., etc. So there are a lot of things that you can see. For example, it's telling you that higher searches are happening in Karnataka, Haryana, Maharashtra. तो obviously अभी तो आप अगर पंजाब में focus कर रहे हो, then this might not be able to help you right now. But if you want to focus at a national level, then it is clearly telling you कि सबसे ज़्यादा concentration of this is happening where. Right. As similarly pertaining to each category, you can keep asking this tool to give you data. Okay, does this help? Shall we move on to the हम next? एक और क्वेश्चन हम ज्योग्राफी में सिटी वाइज भी कर सकते हैं या सिर्फ रीजन वाइज है?
नहीं, सिटी वाइज ऑप्शन भी है देखने का, यहाँ पे सब रीजन एंड सिटी दोनों देख सकते हो आप, देयर इज अ ड्रॉप एंड डाउन। हाउ, और कितना कोई रेडियस वाइज भी देख सकता है, लाइक सिटी वाइज, या वो बहुत बहुत नीश होगा? नहीं, रेडियस वाइज तो नहीं दिख पाता है एक्चुअली। व्हाट हैपेंस इज दैट द रीजन दैट गूगल डजंट गिव radius wise this thing is because they don't want people to use this particular data to run ads. जैसे for example, since this is a free tool, if you want to run ads they want you to use their keyword tool etc. तो इसलिए वो यहाँ पे वो जितना सारा डेटा नहीं देते हैं, but otherwise it is a good indicator for you to focus your efforts on, right? If you want to say, let's say buy properties की सबसे ज्यादा बेंगलुरु में सर्चेस हो रही हैं, so you know as a business you want to focus on Bengaluru more, but it will not give you radius wise data like जैसे आप Facebook पे जब एड्स टारगेट करते हो तो आप रेडियस वाइज टारगेट कर सकते हो कि सिटी में करना है या उसके 25 किलोमीटर बाहर तक करना है या 50 किलोमीटर बाहर तक करना है, बट यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, right? Any more questions? Shall we move forward to the next tool? Let's move forward. Yes, yes. We'll take the questions on the next last session. Thanks, sure. So now after this, I would just wanted to discuss the point of share of voice also. I know that all of us are startups here. Most startups के केस में popularity score इतना नहीं होता है कि हम share of voice देख सके, लेकिन फिर भी आपका ब्रांड को आपकी कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में लोग कितना अच्छे से जानते हैं, you can use Google Trends as a measure of that also. जैसे अभी हमने 5 मोबाइल ब्रांड्स में देखा कि सबसे ज्यादा पॉपुलर आईफोन और सैमसंग है, उसके बाद वीवो है, लेट्स से। वैसे ही सिमिलरली अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी कंपेटिटर ब्रांड्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, उसको हम बोलते हैं share of voice, which is basically share of the searches that people are doing for your particular brand. It is a very good indicator of brand popularity कि आपके ब्रांड को कितने अच्छे से लोग जानते हैं. So this is also something that it can be used for, probably at a later stage, but very good for brand awareness measurement. Okay, second tool, very interesting. This is one of my favorite tools, is the Meta dashboard, which is again a free tool. So I'm going to give you guys a tour of a live brand on Meta dashboard. Right, I hope my screen is visible. Yes, it is. Okay, so ये Meta Business Suite है. Whenever you create a business page on Facebook, तो आपको ये इसका access free में मिलता है. तो if you go to your profile and in your page, you will get an option to visit the Meta Business Suite, and this is what the dashboard, the home page of the dashboard looks like. तो जैसे ये हमारा एक पेज है, ठीक है, अब हम ये हमारा मेटा बिजनेस स्वीट है, ठीक है, तो आप इसमें मैं आपको सिर्फ 3 चीजें बताऊंगी, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू कैन डू ऑन योर बिजनेस स्वीट. नंबर 1 इज यू कैन लुक एट योर इनसाइट्स ऑफ बोथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम. इसके लिए जरूरी है कि आपका इंस्टाग्राम पेज आपके फेसबुक पेज से कनेक्टेड होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. वन सेकेंड, लेट मी जस्ट रीलोड. राइट, ठीक है, तो ये आपका ओवरव्यू है. तो ये आपको देखो बता रहा है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, यहाँ पे आप ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो. दिस इज वेरी इजी. लेट्स से हमको लास्ट 7 डेज का देखना है, तो लास्ट 7 डेज में आपकी फेसबुक पेज की रीच इतनी थी, आपके इंस्टाग्राम पेज की रीच इतनी थी, फेसबुक पेज की रीच आपकी ये है ब्लू कलर की, ये थोड़ी बड़ी है, इंस्टाग्राम की डिप हो गई है. सो दिस इज अ ट्रेंड लाइन, अगेन वेरी सिंपल. उसके बाद आप ये भी देख सकते हो कि आपके कितने फॉलोअर्स बढ़े हैं इंस्टाग्राम पे. सो ऑल ऑफ दिस यू कैन एक्चुअली एक्सेस ऑन योर डेस्कटॉप ओनली. आपको बार बार अपना इंस्टाग्राम फोन के ऊपर खोल के स्क्रीनशॉट लेके उसको सेव करने की, इधर उधर भेजने की जरूरत नहीं है. इफ यू हैव अ टीम ऑल्सो, लेट्स से इफ यू हैव अ स्मॉल एजेंसी जो कि आपकी एड्स रन कर रही है, या आपकी कोई टीम है जो कि एड्स रन करती है आपके लिए, तो आप उनसे भी ये मतलब दे विल ऑल्सो हैव एक्सेस टू दिस. तो ये सब आप इकट्ठे डिस्कस कर सकते हो देख के. यू डोंट नीड डिटेल रिपोर्ट वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है उसमें. एज एन अर्ली स्टेज स्टार्टअप, you don't have to spend a lot of time in making reports and studying them. This is a very good tool where you can analyze everything. तो जैसे अब हम ऑडियंस डिटेल पे आते हैं, हमारे टोटल फेसबुक पेज लाइक्स इतने हैं, इसमें ये भी बता रहा है कि आपके फेसबुक को अगर इतने लोग लाइक करते हैं उसमें से कितने मेन है कितने फीमेल हैं,
what is the age gap of most of them? 18 to 24 रेंज में, 25 to 34 रेंज में कितने परसेंटेज लोग हैं, उसके बाद वाले एज रेंज में कितने परसेंटेज लोग हैं. सेम थिंग इट टेल्स यू फॉर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, राइट? तो अगेन ये भी बहुत जरूरी होता है आपको अपने टारगेट ऑडियंस को समझना, कितने मेल वर्सेस फीमेल ऑडियंस है, हाउ व्हाट इज द एज गैप दैट दे हैव, राइट? तो इसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑफर्स बना सकते हो, आप अपने प्रोडक्ट्स बना सकते हो. यू कैन यूज दीज इनसाइट्स इन अ लॉट ऑफ वेज इन योर बिजनेस, अगर आपको पता हो कि बेसिकली कौन से पर्टिकुलर मतलब व्हाट इज द एज एंड जेंडर गैप इन योर पीपल हु लाइक योर कंटेंट, राइट? तो ये है स्वाति, on behalf of the audience, एक क्वेश्चन है मेरे पास. जब हम इंस्टाग्राम या आप फॉलोअर्स दिखा रहे हैं, अगर मैक्सिमम एंगेज्ड ऑडियंस जैसे आप दिखा रहे हैं इसमें 25 से 34 ईयर्स तक क्या है, 25 to 34 is the maximum audience here. In that case, on Instagram, in that case, हमारे को Instagram पे content 25 to 34 के लिए बनाना चाहिए, और Facebook पे जैसे आप देख रहे हैं 18 to 24 is higher. तो दोनों प्लेटफॉर्म पे कंटेंट डिफरेंट हो सकता है, और इन दोनों ऑडियंस को कैसे टारगेट करेंगे अगर दोनों का एंगेज ऑडियंस डिफरेंट है. आप सेम कंटेंट डाल रहे हैं पर आप इन साइट पे देख रहे हैं कि फेसबुक पे 18 to 24 वाला ऑडियंस सबसे ज्यादा है और इंस्टाग्राम पे 25 to 34 है. तो how does one target them going forward? Is this a good trend that there are two different audiences engaging on the similar platforms with the same content? Two different audiences are engaging. Great. So I think it's very important this thing. मतलब it's important that you target content specifically Facebook और Instagram के लिए अलग अलग. बहुत सारे ऐसे brands हैं जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है. पहले तो Facebook Instagram पे सब कॉपी पेस्ट करते थे कंटेंट, कि एक ही पोस्ट बनाई और वही पोस्ट Facebook पे जा रही है और वही Instagram पे जा रही है. बट इट लाइक यू जस्ट सेड, इट डजंट मेक सेंस अगर आपकी ऑडियंस ही अलग अलग है. जनरली ऐसा देखा जाता है कि फेसबुक पे जो ऑडियंस होती है दैट इज 25 और 30 प्लस, लाइक मोर मैच्योर ऑडियंसेस एंगेज ऑन फेसबुक, एंड यंगर ऑडियंसेस, जेंसी ऑडियंस मोस्टली एंगेजेस ऑन इंस्टाग्राम. तो इसलिए इंस्टाग्राम पे आप देखोगे ब्रांड्स कलरफुल मीम्स, कोई टॉपिकल चल रहा है, किसी सेलिब्रिटी की शादी हो गई तो उसके ऊपर कंटेंट ज्यादा बन रहा है, बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ कंटेंट दैट द यंग ऑडियंस इंटरेक्ट्स विद. वर्सेस फेसबुक पे थोड़ा मैच्योर कंटेंट होता है. But in this case, in this brand's case, on Instagram, definitely the 25 to 34 cohort is performing much better. And the reason is the brand is, they have outlets. They are a departmental store that is open all 24/7. That's the name. And they are creating content that attracts this age group more. इनफैक्ट वो एड्स भी ऐसे चलाते हैं दैट इज अट्रैक्टिंग दिस पर्टिकुलर ऑडियंस मोर. दैट इज व्हाई दे आर इंटरेक्टिंग ऑन इंस्टाग्राम मोर विद देम. एंड डेफिनेटली द कंटेंट स्ट्रैटेजी चेंजेस अकॉर्डिंगली. आपको पता है कि 25 to 34 इयर्स ऑफ एज में आपकी जो ऑडियंस है, which products are they most likely to buy from you? तो फिर आप वो प्रोडक्ट्स का कंटेंट ज्यादा डालोगे फॉर एग्जांपल, राइट? उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि ये ऑडियंस किस टाइप के कंटेंट के साथ ज्यादा एंगेज करती है, फिर आप उस टाइप का कंटेंट डालोगे. एंड ऑन फेसबुक 18 to 24 एंड 24 to 34 का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है. इनफैक्ट 18 to 24 यंग ऑडियंसेस का ज्यादा है, मेन ज्यादा है फेसबुक पे. तो आप मेन फोकस प्रोडक्ट ज्यादा प्रमोट करोगे फेसबुक पे एज कम्पेयर टू ऑन इंस्टाग्राम. तो दिस इज अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी. इनफैक्ट आई एम टेलिंग यू गाइज दैट बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जिनका की लाखों का बजट होता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे प्रमोट करने का, वो लोग भी ये स्ट्रैटेजी यूज नहीं करते एंड इट कॉस्ट देम इन द लॉन्ग रन. उनको पता होता है कि उनका फेसबुक और इंस्टाग्राम का ऑडियंस अलग अलग है, फिर भी सेम पोस्ट करते रहते हैं और सेम पोस्ट प्रमोट करते रहते हैं, विच इज नॉट अ गुड आइडिया. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, right? So we'll quickly move on from this. I hope Supriya that was helpful. This was Absolutely. मैं यही पूछना चाहती थी कि लोगों को ये पता होना चाहिए, स्पेशली दी ऑडियंसेस. आप कम कंटेंट बनाइए पर उतना कंटेंट बनाइए जहां आपके प्लेटफॉर्म इंगेज कर रहा है, क्योंकि अगर आपका इंगेजमेंट ऑडियंस ही डिफरेंट है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो शायद हमारा कंटेंट स्ट्रैटेजी को चेंज होना चाहिए. तो दैट्स ऑल आई वांटेड टू काइंड ऑफ इन्फर फ्रॉम दिस डेटा, but we'll go forward now. Absolutely.
So then after that you can actually go and see the results. आप देख सकते हो Instagram and Facebook पे आपके क्या content अच्छा कर रहा है, how many new likes. This is again a summary of Instagram and Facebook, right? Now very important is second thing. This was the first thing that you can see an overview. The second thing is it also gives you a detailed understanding of your audience जो भी हमने देखा, but it will also tell you the top towns and cities on Facebook and Instagram अलग अलग. So this will also really help you in focusing your efforts. Let's say for example आपको influencer marketing करनी है, आपको influencers को let's say अपना product भेजना है review करने के लिए, या कोई कॉन्टेस्ट करवाना है उनसे, उनसे शाउट आउट दिलवाना है अपने प्रोडक्ट के लिए, है ना? अब इमेजिन अगर आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे मेजॉरिटी ऑडियंस दिल्ली की बैठी हुई है और अगर अगर आप मुंबई वाले इन्फ्लुएंसर को कुछ भेज दो, दैट इट डजंट मेक सेंस अनलेस अगर आपकी स्ट्रैटेजी ये है कि यू वांट पीपल इन मुंबई टू सी योर प्रोडक्ट, राइट? बिकॉज सबसे इजी टू फॉलो स्ट्रैटेजी स्पेशली फॉर अर्ली स्टार्टअप्स इज दैट जहां से आपको ऑर्गेनिक ट्रैक्शन मिल रही है ना, आप पहले उसको पकड़ के ग्रो कीजिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हियर यू कैन इजीली सी कि सबसे अच्छी ट्रैक्शन आपको दिल्ली, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में आ रही है फॉर एग्जांपल. तो आपको इन्हीं सिटीज पे फोकस करना चाहिए फॉर ऑल योर एफर्ट्स. अगर आपको कोई ऑफलाइन इवेंट करना है तो भी आपको इन्हीं सिटीज में करना चाहिए, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट गिव्स यू वेरी डिटेल्ड इंसाइट इनटू योर ऑडियंस. And then obviously countries तो है ही, मतलब it's India mostly here. So this is the second, the first thing, audience number one. Number two is it gives you a detailed overview of आपका कौन सा content अच्छा perform कर रहा है, कौन सा content अच्छा नहीं perform कर रहा है, ठीक है? So let's say हम ये देख रहे हैं सबसे अच्छा परफॉर्मिंग कंटेंट है हमारा जहां पे हम टेक्स्ट पोस्ट डाल रहे हैं, फिर हम इमेजेस डाल रहे हैं, फिर हम वीडियोस डाल रहे हैं, राइट? दीज आर द नंबर ऑफ पोस्ट दैट द पर्टिकुलर ब्रांड हैज डन, राइट? अब हम ऐसा करते हैं, दिस इज लास्ट 90 डेज का डेटा, राइट? सो दिस विल टेल यू, this particular content will tell you this particular dashboard will tell you what kind of content are people engaging the most with, ठीक है? सो टॉप परफॉर्मिंग हमारी ये ऑर्गेनिक पोस्ट है. लेट मी जस्ट गो टू द कंटेंट डिटेल, इट विल बी बेटर टू सी दिस. हाँ, ठीक है. तो यहाँ पे लेट्स से हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से पर्टिकुलर कंटेंट के ऊपर हमारी सबसे ज्यादा इंगेजमेंट आ रही है, राइट? विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इंस्टाग्राम डैशबोर्ड भी ये देता है, लेकिन अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दोनों का इकट्ठे देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो. तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके देख सकते हो on this particular this thing. हमने इसको अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया. तो हम ये देख सकते हैं कि लास्ट 7 डेज का कौन सा कंटेंट ऐसा है जिसपे हमको सबसे ज्यादा लाइक्स एंड रिएक्शंस आए हैं, राइट? सो हम ये देख सकते हैं कि लेट्स से दिस पर्टिकुलर कंटेंट दैट वाज पोस्टेड ऑन 10th February, इस पे हमको सबसे ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आए हैं. उसके बाद किस पे सबसे ज्यादा लाइक्स एंड कमेंट्स आए हैं. फिर आपको ये भी दिख रहा है कि ये पोस्ट था या फिर ये रील थी या फिर ये स्टोरी थी, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है. एंड इंस्टाग्राम और फेसबुक सब कुछ इकट्ठा देखने को मिल रहा है. आप इसको फिल्टर भी कर सकते हो. यू कैन सी दैट ओनली यू ओनली वांट टू सी इंस्टाग्राम वर्सेस फेसबुक, बट दिस इज समथिंग वेयर यू आर सीइंग इट ऑन योर डेस्कटॉप. बिकॉज बहुत बार क्या होता है ना, इंस्टाग्राम की इनसाइट्स में जब हम जाते हैं, यू आर ऑन योर फोन, तो फोन पे वो डेटा अच्छे से दिख नहीं पाता है. एंड देन यू एंड अप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स, ब्लोइंग इट अप एंड देन यू नो सेविंग देम. सो आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है. आप ये डेटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब हमको ट्रेंड्स देखने होते हैं ना, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट इज परफॉर्मिंग वेल, दिस इज वेरी हैंडी, right? So this is the second use of this particular tool. Now the third most important use of this particular tool is that you can actually use it to plan your content. आप कैलेंडर बना सकते हो, आप इसमें अपनी सारी फ्यूचर की पोस्ट स्केड्यूल कर सकते हो फॉर बोथ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, लोगों को लगता है कि सिर्फ फेसबुक की पोस्ट शेड्यूल हो सकती है, लेकिन आप डेस्कटॉप डैशबोर्ड से आप इंस्टाग्राम की भी पोस्ट, रील, स्टोरी सब कुछ आप शेड्यूल कर सकते हो. तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली, स्पेशली इफ यू आर अ वन पर्सन बिजनेस, इफ यू आर अ सोलोप्रेन्योर, या फिर अगर आप सिर्फ मार्केटिंग, यू नो, यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन मार्केटिंग बट यू स्टिल वांट टू डू इट. आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन निकालिए, उसमें आप इकट्ठा बैठ के बैच में कंटेंट बनाइए एंड देन यू कैन जस्ट शेड्यूल इट एंड यू आर फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक. बीच बीच में यू कैन कीप चेकिंग हाउ इट इज परफॉर्मिंग, बट देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट पोस्टिंग समथिंग एवरी डे, राइट? दिस विल टेक केयर ऑफ दिस. इनफैक्ट बेस्ट पार्ट इज ये आपको अपनी पुरानी टाइमलाइन भी बताता है कि आपने पहले
थोड़े दिनों में क्या क्या पोस्ट किया हुआ है, लेट्स से, राइट। तो आपको अपना पूरा ट्रेंड पता लगता रहेगा। यू डोंट हैव टू मेंटेन बड़े बड़े डेक्स, जैसे होता है ना एजेंसी वाले बड़े बड़े डेक बना के देते हैं, ये क्रिएटिव था, ये उसकी कॉपी थी। यू डोंट हैव टू गेट इन ऑल ऑफ दैट। दिस इज अ वेरी इजी सॉर्टेड वे। आपको सब पता लगेगा इस दिन आपने फेसबुक पे क्या पोस्ट किया था, इंस्टा पे क्या पोस्ट किया था, और उसको आप फ्यूचर के लिए स्केड्यूल भी कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ दिस इज द टॉप राइट कॉर्नर is where you can actually create your content. यहाँ पे आप पोस्ट की डिटेल्स डाल सकते हो। इट ऑल्सो सेज दैट यू कैन कस्टमाइज योर पोस्ट फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, विच इज एग्जैक्टली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, कि आप जरूरी नहीं है कि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सेम कंटेंट डालो। यू कैन probably put up the same picture, but you can change the caption and this tool will post it accordingly separately on both Instagram and Facebook, right? Then you can also add a button, मतलब जो भी आप करना चाहो आप इस पे कर सकते हो। You can either option, you have an option to publish it, or you have an option to schedule it for later, or you have an option to save it as a draft also. Maybe you want to work on it later on, then you can do that also. और फिर आप यहीं से post boost भी कर सकते हो, right? So this is an all in स्वाति, one सबसे tool. कुछ क्वेश्चंस, एक मेरा क्वेश्चन है इसको डैशबोर्ड को देखते हुए, हाँ जी। कि कई बार अलग टाइम पे अलग पोस्ट करना हो तो दिस विल हैव अ डिफरेंट टाइम आल्सो। इंस्टाग्राम पे डिफरेंट पोस्ट कर सकते हैं, टाइम पे स्केड्यूल डिफरेंट हो सकता है फॉर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, राइट? या डेफिनेटली डेफिनेटली आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आ रहा है ना ऑप्शन दैट यू वांट टू पोस्ट इट ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम सेपरेटली। तो अगर आपने फेसबुक ऑप्शन सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ फेसबुक पे स्केड्यूल होगा, अगर आपने इंस्टाग्राम सेलेक्ट किया तो ये सिर्फ इंस्टाग्राम पे स्केड्यूल होगा। अगर आपको दोनों पे सेम टाइम करना है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं और सेम टाइम पे सेम चीज पोस्ट हो जाएगी। ये आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑल दी एंटरप्रेन्योर्स हियर, कि आप अपनी इनसाइट्स पे, जैसे कि स्वाति ने बिगिनिंग ऑफ द स्लाइड पे दिखाया कि उन्होंने ऑडियंस के बारे में बात करा, वैसे ही टाइम बेस्ड भी आता है इनसाइट्स में कि कौन से टाइम पे आपका ऑडियंस सबसे ज्यादा एंगेज्ड है, और उसी के अकॉर्डिंगली आपको अपना पोस्ट स्केड्यूल या करना चाहिए। तो जब आप प्लानर या स्केड्यूलर में जाएंगे, अगर आपका ऑडियंस 3 या 6 बजे सबसे ज्यादा एंगेज्ड है, तो आप उस हिसाब से अपना पोस्ट करिए। और अगर इंस्टाग्राम पे वो 12 बजे है दोपहर के, तो आप 12 बजे पोस्ट करिए। आपको ये टूल एक ऑप्शन देता है कि आपको अलग अलग टाइम पे पोस्ट कर सकते हैं, और वो आपको मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आपको आज 12 बजे पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे और 6 बजे करना है फेसबुक पे। You can use this free tool to schedule your post and see how and maintain it. So this is not once. You should keep doing this for a couple of days to see traction, because insight एक दिन में नहीं बदलेगा. It will take some time for your audience to keep engaging and the algorithm to keep figuring out if this is the right time. Maybe एक हफ्ते के बाद जब आप insights देखोगे तो वो शायद 3 बजे आपका बिल्कुल bang on audience होगा for engagement. Swati, back to you, but I saw that insights tracker, though I thought I will add up No, to of the course. queries from the audiences as well. Great, great. Of course. Any more queries on this particular thing? Because we have one last feature from this tool to discuss, and then we can move to the other tool. But that feature is One very important. question, I'll take a question, I'll take about 2, 3 questions, and a couple of them in the thing. How do we post the same? How about that we post the same content on both, but promote according to insights? That means पोस्ट इकट्ठे किया, बट अगर फेसबुक पे 18 से 22 साल के ऑडियंस ज्यादा एंगेज कर रहा है, तो मैं प्रमोट सिर्फ उन्हीं को करूं, और इंस्टाग्राम में 25 से लेके 30 की एज तक। Is that a strategy which they can follow? Of course, that's exactly the strategy that you should follow. But at the same time, आपको अपने target audience का भी ध्यान रखना है. So by target audience, I mean to say that in a lot of cases, आप जो कंटेंट बना रहे हो, लेट्स से आपका प्रोडक्ट सिर्फ यंग ऑडियंसेस के लिए है, लेट्स से यू आर मेकिंग एक्सेसरीज, है ना, या फिर आप होम डेकोर बना रहे हो, तो होम डेकोर का जो सामान है वो मोस्टली थोड़े मेच्योर ऑडियंसेस खरीदते हैं, 25 प्लस की एज वाले खरीदते हैं अगर आप होम डेकोर का प्रोडक्ट बना रहे हो। उस केस में अगर आप देख रहे हो कि आपके कंटेंट के साथ 18 to 24 यंग ऑडियंसेस ज्यादा एंगेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके जो टारगेट ऑडियंस आप जिसको टारगेट करना चाहते हो, दैट इज नॉट मैचिंग विद द पीपल हु आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद योर सोशल मीडिया कंटेंट, राइट। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा मैच्योर कंटेंट बनाना पड़ेगा जो कि आपके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। सो इट वर्क्स बोथ वेज।
right? If you feel that 18 to 24 is the right target audience for your brand and you are getting traction from them, that means you should keep doing what you are doing. You should do more of it. You should create content that engages the young people. एंड एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रोडक्ट तो यार मैच्योर ऑडियंसेस के लिए है, ये तो सिर्फ यंग लोग एंगेज कर रहे हैं, दिस इज नॉट माय टारगेट ऑडियंस, दे आर नॉट गोइंग टू बाय माय प्रोडक्ट, दे माइट लाइक योर कंटेंट, हो सकता है वो आपका पेज फॉलो कर ले, but they might not want to buy your product in the long run, so they might not be the right target audience for you. तो आपको अपनी strategy accordingly change करनी चाहिए, and this is applicable for both Facebook and Instagram, even YouTube and other platforms, same thing is applicable, right? Shall we move on? Great, great. Yes, yes, that's it. Okay, great. So now, okay, so we will now move on to the last amazing feature of this particular platform, which is again one of my favorite features, which is the inbox. Okay, so why the inbox is so great? क्योंकि इसमें आप ना सिर्फ Facebook but Instagram के messages भी देख सकते हो. I know a lot of small businesses have this problem. आपको बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि इंस्टाग्राम पे आप पूरा दिन फोन पे लगे रहना पड़ता है, या फिर इंस्टाग्राम पे sometimes people are not comfortable with answering a lot of questions on Instagram, right? तो आप अपने सारे के सारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ना सिर्फ मैसेजेस लाइक डीएम्स बट इवन कमेंट्स यहाँ पे देख सकते हो. तो जैसे कि आप ऊपर देख रहे होगे, ये दैट आई एम स्क्रोलिंग थ्रू दिस, दीज आर ऑल योर मैसेजेस. देन यू कैन सेलेक्ट कि आपको सिर्फ फेसबुक मैसेंजर के मैसेजेस आए, फिर आप यू कैन सेलेक्ट आपको सिर्फ इंस्टाग्राम के डीएम के मैसेजेस आए, फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको सिर्फ फेसबुक के कमेंट्स दिखाई दे एंड सिमिलरली इंस्टाग्राम के कमेंट्स दिखाई दे, राइट? एंड देन यू कैन आंसर देम फ्रॉम हियर अकॉर्डिंगली. तो जरूरी नहीं है कि आपको इंस्टाग्राम पे लॉग इन करके ही सब कुछ मैसेज करना है. इफ यू आर ऑन वन प्लेटफॉर्म, यू आर मोर कंफर्टेबल विद दिस प्लेटफॉर्म, you can keep addressing all queries from here. That is the first thing. Second thing is you can actually mark some messages as unread or important, or you can label them. बहुत बार ऐसा होता है कि किसी ने लेट्स से किसी ऑर्डर की क्वेरी पूछी हमसे इंस्टाग्राम मैसेज पे, राइट? In those cases, we cannot answer them in a lot of cases, right? हमको लगता है कि बाद में आंसर करेंगे, or you don't have the answer to them right now, which is very important. So in that case, this is very helpful. You can actually mark this particular message as important, or you can mark it as unread so that you can read it later, or you can also label it. Let's say you want to label it in a way like this is a business query, तो आप label बना सकते हो यहाँ पे on your right side. Wait, I'll just show you how you can make labels. राइट, सो ये ऑन योर राइट बॉटम साइड यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप लेबल ऐड कर सकते हो. तो आप all admins need to agree to the terms. So I'll make sure that please make sure that you are an admin if you're trying to add a label. Only admins can add this. So anyways, you can add this particular, let's say this is a new order, or this is an order that needs a refund, or this refund has been issued, or whatever, this is a new business query, this is a potential client, ऐसे करके आप उसको label कर सकते हो so that you can go back to it. A lot of things, in fact for me also personally, I find this very useful. I do it on my personal page also. I have updated my personal page to a business page because in many cases when people message you, screenshots संभाल के रखने पड़ते हैं, which is very inconvenient, कि अच्छा this person had basically asked this question, so this comes very handy in that case. So this is for all of you who are actually managing a small business online, or you are taking orders online. Very important for us to use this, right? So that's it. These were the three ways that we can use the Meta Business Suite. First is we saw the insights. Second, we saw the planner. And third was the inbox, where you can actually handle all your queries together. Any particular questions on this dashboard from anyone? A couple of them I'll probably go through. How do you strategize stories and posts? Like, is there a schedule we should follow? How many? How often? And कितना hit and trial के बाद पता लगेगा कि ये ठीक है? जैसे कोई brand start कर रहा है, उनका question है how to strategize. ये बहुत ही broad question है.
Isko, if you can break down in few guidelines, Swati, on how to start strategizing posts and scheduling. Of course, see, content strategy is again a very detailed thing to do, obviously, but at the same time, it doesn't mean that you cannot start doing it right away. So, content strategy can be broken down in a lot of things. But the first thing that you need to figure out is, for number one, is your target audience. And I think when we start working on a page, in a lot of cases आपको नहीं पता होता who your target audience is, so you need to do a market survey. You need to understand from your product कि आप what product and service you want to sell, what kind of target audience you have, and accordingly you have to design content for them. And second, and the most important, is look at your competitors, or look at what people are doing in the industry, right? Because starting से आपको कुछ नहीं, you will have to start working with a lot of content pillars, and then you will have to see what is working well, what is not working well, and accordingly you will have to keep changing your strategy as you go along, right? Even for the biggest of brands, the strategy is something that is not always fixed. Every month you have to relook at your strategy, you have to see what worked last month, what did not work last month, and then accordingly you have to change your strategy. But specifically, it's important in the beginning to start creating engaging content, to start creating content that engages your target audience, and most importantly, see what particular content they are engaging with in your from your last performance, right? Like we saw from insights, you can easily see कि आपने last महीने or last 2 months or last 3 months which particular post was actually giving you the highest engagement. So you see what you did right there, and you keep following it, or you keep creating similar content. Sorry, I can also see a lot of questions. Should we grow a Facebook page or a Facebook group? Shall we answer these questions right now, Supriya, or shall we wait towards the end? We can. How many tools are left? One more? Two? We have two more, three more Yeah. actually. So This is the second one, so we'll let's take move only forward. the. Let's move forward with the tools, and we'll address as many questions. For everyone, the questions which are not answered, we will try doing it post the session as well. But we would like to, in the interest of time, like to cover the tools for now, because the session has about only 30 minutes more to go, and we have a couple of more tools to cover. So we will address your tools. We'll probably give a synopsis towards the end of the session, which will help address your questions. So for now, we'll skip the one-on-one and move on to the next tool. Yes, sure. So the third tool is Canva. Fun fact is that I make most of my presentations, including this one, also on Canva. So the template that you see here is one of Canva's templates, very easy to use. You just pick a template that you like, and you start adding your images and your text into it. So Canva is great for it. So let us go through the details of Canva. And there are three particular things that you can do with Canva. One is obviously you can create social media content, stories, reels, cover images, etc. You can also create any event promotional content. Number two, which is very important, is in a lot of cases ना हमारे पास photos या videos नहीं होती हैं to promote, right? Somebody was asking what kind of images to use in social media content, and I think this is the perfect answer. Never ever use images of people who do not reflect your target audience. जैसे आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि कोई इंडियन टी प्रमोट कर रहा है, लेकिन उसमें यू आर एक्चुअली शोइंग अ फॉरनर ड्रिंकिंग दैट चाय. यू नो, बाग बकरी चाय को अगर कोई अमेरिकन नेशनल पीता हुआ दिखेगा, तो इट विल नॉट लुक एज ऑथेंटिक एज somebody like us who is drinking it. So the kind of imagery, the kind of models, the kind of faces you show in your ads, in your content, it should be relatable to the consumers. And in a lot of cases, I understand because of budget constraints, हम लोग फोटो शूट या वीडियो शूट नहीं करवा पाते हैं हमारे प्रोडक्ट के साथ. तो इन दिस केस यू कैन यूज स्टॉक इमेजेस. स्टॉक इमेजेस में बहुत सारे इंडियन फेसेस होते हैं, स्टॉक वीडियोस में बहुत सारे इंडियन फेसेस होते हैं हमारी टारगेट ऑडियंस के से मिलते जुलते, जिनके साथ दैट विल लुक मच बेटर ऑन योर पेज, दैट यू कैन यूज. एंड अ लॉट ऑफ देम आर फ्री, एंड Canva also uses gives options of a lot of those, right? And then obviously the third and most important thing is it's important to keep a consistency in fonts and colors. The biggest mistake that a lot of startups do when they are making their social media content is we feel कि यार ठीक है, अभी तो हमारे कम फॉलोअर्स है ना, क्या फर्क पड़ता है, जो अच्छा लग रहा है हम लोग रोज नया फॉन्ट ट्राई करते हैं, right? Which is
which does not make your brand look professional. The number one thing विजुअली आपके ब्रांड को जो प्रोफेशनल बनाता है वो ये है कि आपकी ब्रांड्स और कलर्स में कंसिस्टेंसी हो, सो फॉन्ट्स और कलर्स में कंसिस्टेंसी हो, you're using the same kind of colors, you're using the same two fonts in your social media content. That will make it look professional, it will make it look like you are taking this seriously, right? Which is very easy to do with a tool like Canva. So let's hop on to Canva's dashboard. So as you can see, this is the Canva dashboard. But you can opt to, and this is completely free of cost. बहुत सारे pro options भी हैं, but in the beginning you don't need to buy a pro option. You can just go with the free option. It also has a lot of options. So as you can see, you can create docs, you can create presentations. So let's go to social media since that is very relevant for us. So आप लोग एक quickly collection बना सकते हो. Now I'll show you और ज्यादा टाइम बचाने के लिए कलेक्शन का क्या फायदा है, ठीक है? कलेक्शन का ये फायदा है कि आप एट द सेम टाइम सेम एक ही पर्टिकुलर टेक्स्ट या एक ही पर्टिकुलर इमेज से इंस्टाग्राम पोस्ट, स्टोरी, फेसबुक पोस्ट, कवर सब कुछ बना सकते हो. यू डोंट हैव टू क्रिएट all of these things separately क्योंकि इनकी sizes अलग अलग होते हैं. Now what this tool will do is this tool will actually adjust images and text accordingly अपने आप. आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि अरे ये तो स्क्वायर है, ये तो वर्टिकल है, ये तो हॉरिजॉन्टल है, इसमें मेरे को टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा. सो लेट मी यूज दिस फॉर एग्जांपल. Let me add my main text. So I will say organic hair oil. Okay, this is my main text. Additional hair oil to prevent hair loss. Let's say anything random. So I've just added what I want to sell, my main text. This is my additional text. Then I will continue. Then if I have an image or if I have a logo, तो मैं logo डाल सकती हूँ, or I can continue without it. And then I can select what kind of template I want to use, right? अगर मैं यहाँ पे image लगा देती, for example, then it would have been easy for me to use the image of my product क्योंकि यहाँ पे for example there's a product that they are showing, right? तो आप वो भी कर सकते हो, or you can simply continue without it. I will just show you guys an example of logo also. I think that's very important because you can change the placement of your logo here. Then we continue, and then you can also change your color palette. So I have made different color palettes for different brands of mine, but let's say this is a nice color palette, right? Or if you want to make it more quirky, more colorful, you can select this, but then you have to make sure that you stick to this. तो अब आप इसमें कलेक्शन देख सकते हो. हमने एक हेडिंग डाली, एक सब हेडिंग डाली और एक कलर पैलेट यूज किया, और उससे टूल ने हमारे लिए इंस्टाग्राम पोस्ट भी बना दी, स्टोरी भी बना दी, फेसबुक पोस्ट भी बना दी और फेसबुक का कवर भी बना दिया. So obviously you might want to change a couple of things here and there, लेकिन essentially अगर आपके पास टाइम बहुत ही कम है और आपको फटाफट you just want to create a couple of posts, then you don't have to think so much about these things. You can just go ahead and create all of this thing in bulk, finish it, export it, and you can use all of them together. Right, so this is a very quick create kind of an example अगर आपके पास बिल्कुल ही 5-10 मिनट का टाइम है. Otherwise there are a lot of things that you can make. So social media specific, there is an Instagram post, Facebook post, Instagram story. Let me show you an example of an Instagram post. I need volunteers, guys. Can you guys give me a product to work with so that we can make a sample post together so that I can show you how easy it is? Okay, I'll give 4 options to the ऑडियंस एंड जो चैटबॉट में बताएगा 4 ऑप्शंस में से जिसके मैक्सिमम वोट्स होंगे, we'll actually I'll give 3 options and उसमें से whichever option is good she can create that for you right away. One Yes. is a D2C business, which is for example a beauty product being sold online. Second is a edutech platform that is a service based industry का post, and the third is a retail store. तो एक रिटेल स्टोर, एक रेस्टोरेंट है, एक ऑनलाइन ब्यूटी ब्रांड है और एक सर्विस इंडस्ट्री है जो ट्यूशंस, ऑनलाइन ट्यूशंस लेते हैं. तो ये 3 में से कौन सा ब्रांड पे हम सबसे ज्यादा फोकस कर सकते हैं, जिसके मैक्सिमम आंसर्स आएंगे उसका पोस्ट बनाएंगे. Okay, service industry, D2C, retail. 3 ऑप्शंस हैं. D2C
और ब्यूटी वो एक ऑप्शन है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है आपका रिटेल स्टोर, और तीसरा है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री। सो रिटेल, सर्विस और D2C। One option only, Vidhi. Retail, or Priyanka, one option. Retail, D2C, service. Seems to be a tie between. Yeah. No one winner right now. Okay. Has everyone voted? I don't see all participants voted right now. Last 2 minutes to vote. Last 20 seconds to vote. D2C, retail or service? Last 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Now we'll take the call. So we've got a couple of responses on D2C, more on services, and then retail. So in the interest of the answers, I would say we can do a D2C brand. Okay, let's do a D2C brand. Let's select, okay, let me just select the simplest of all, right? Let me just select a moisturizer or a face wash. I mean, that's the simplest of all. Yeah. Yeah. Okay, great. So there are two ways to do this. Either you can select a particular template by searching here, or you can basically go through all the templates and make your own. So we will try to do the simplest of things. Let me just type face wash here and see what kind of answers for templates we get. Wow, so many. You also have a men's face wash. Uh, you have an organic face wash. Okay, I think we really like this, so we can select this, right? So that's it. I mean, I don't think we even need any second option. But it's very important that the template that you pick, you stick to that template. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही फेस वॉश के लिए कैनवा के 5 5 6 6 अलग अलग टेम्पलेट्स के साथ काम करें. That's not how it works, because you have to stay consistent. So you should take a note of the fonts and the colors that this particular template is using. And okay, it says organic face wash. It doesn't actually product का जो है image हमको replace करनी चाहिए. Ideally you should add the image of your own product. This is just a placeholder. आप अपने खुद के product की image का PNG, which is without any background. In fact, you can make that also in Canva if you have a pro option. You can actually edit any image, remove the background, make it into a PNG image and use it, right? PNG images without background, transparent background. जैसे ये transparent background है, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, कहीं भी घुमा सकते हो, इसके साथ white background नहीं है, तो इसको कट आउट किया गया है फॉर एग्जाम्पल, राइट? तो यू कैन यूज दिस. और इफ यू डोंट वांट टू शो योर प्रोडक्ट, आपको लेट्स से सिर्फ एप्लीकेशन दिखानी है, तो see these are also great options. In fact, if you go through the templates, so you will get 4 to 5 content pieces for the entire week. ठीक है, तो हम चलो ये let's make 4 to 5 content pieces for the entire week. Okay, but we will stick to 2 3 color options, we will stick to 2 3 font options. Okay, so let me say that I want to stick to just one font here, which is this. Okay, then you can, obviously there are a lot of things here, I will not go into the details because it will be very time consuming, but here spacing में आप line spacing कम कर सकते हो, letter spacing बढ़ा सकते हो, whatever you feel like. I mean, the longer time you spend with it, the better you will get to know about the tool, right? So in the beginning, experiment with it as much as you want to. So let's say face wash steps, you just add your logo here and you have it, right? Number two, let's make a second post. This can be a second post. It's telling you the benefits of for washing your face daily, right? The morning face wash removes acne. It's for sensitive skin. It's with vitamin C too. It's giving you all the features of the particular face wash. Then, if you want to showcase में क्या ingredients हैं, you can do that, or you can also add an illustration. This illustration style works really well, right? But you just have to make sure that the color of these boxes and the font that you're using should be the same, right? Let's say we want to use
this particular color here. तो हम क्या करेंगे? Very simple. You select this box, go to the color option, right? You can just copy the color code. Color code is very important, guys, because green or blue के thousands of shades हो सकते हैं depending on the color code. It's very important to stick with the color code. So you copy this color code, you go to your previous uh, post, and you just change the color, right? So रिसेंट कलर्स में आ जाता है वैसे, बट एज सिंपल एज दैट. तो अब इससे क्या होगा? टू पोस्ट, योर टू पोस्ट विल स्टार्ट लुकिंग सिमिलर क्योंकि यू आर यूजिंग सेम काइंड ऑफ कलर्स, एंड इफ पॉसिबल यूज द सेम फॉन्ट ऑल्सो, दैट विल ऑल्सो रियली हेल्प, राइट? सो ये हो गया फेस वॉश. लेट्स ट्राई सम अदर प्रोडक्ट नाउ. लेट्स ट्राई, ओके, आई विल जस्ट गिव यू एन ऑप्शन ऑफ अ रिटेल of a service industry, right? I'll do a short video also with you. I see that you're asking that question, but we will also see a service industry template, right? Service industry, let's say an agency. Okay, let's say your digital marketing agency is an option that has come up. So you can also create posts on a digital marketing agency. So I think this is a great one. It says digital marketing agency. You can actually remove this and add your logo here, and that's it. What if someone wants to change it according to brand colors? स्वाति, जैसे ये येलो एंड ब्लैक है और किसी के ब्रांड का जो लोगो कलर्स हैं और ब्रांड गाइडलाइंस हैं वो ब्लू और ग्रीन हो, तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, हर हर कलर टेम्पलेट में इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो. लाइक आई सेड, यू जस्ट नीड टू नो द कलर कोड ऑफ योर पर्टिकुलर टेम्पलेट, राइट? तो ये तो बैकग्राउंड में जो ब्लैक है ये इमेज है, तो आप ये इमेज हटा के व्हाट यू कैन डू इज, लेट्स से यू सेड दैट इट्स ब्लू, राइट? तो लेट्स से background color that I want to use is, let's say it's this blue, okay? And this yellow is, let's say it's a lighter shade of yellow, or maybe it's a green, right? This looks better. So in this case, now imagine, let's imagine that this is our logo, ye digital marketing agency, and this bulb is our logo, and these two are our brand colors, and we want to show people how to grow their business, right? तो आप यहाँ पे अलग अलग elements, अलग अलग illustrations भी search कर सकते हो. There are wonderful graphics that you can use, right? There are wonderful stickers that you can use. So let's say we want to select graphics, and here I will just write the word grow because I want to show growth. So देखो growth आ गया, ठीक है? You can actually change this color also, make it into white because white is looking better. तो आपने growth दिखा दी business की. Then or if you want to show it into a very creative way, you can show something like this, or you can show, I mean there are multiple options, right? But you have to stick with one. I think we'll go with this. This is great because it's an illustration. It actually shows a person who is growing their money, so that's a great option. And I want to move this to the back side, so I will change its position and move it backward ताकि जो हमारा text है वो इसके ऊपर आ जाए. And that's it. Grow your business. Maybe here you want to say contact here, or grow your I think I want to write to digital marketing business. तो आप इसको भी कर सकते हो. You can increase the space here like this. I mean, you can use any, you can templatize as much as you want, you can customize as much as you want, but it's always best to stick with the template, because if you don't have a design sense, or in the beginning, then it becomes very difficult to understand what font is looking good, etc. तो इसलिए in the beginning we try to stick with templates. आपको जो template अच्छा लग रहा है वो template pick करिए, and then you go with it, right? So let's say इसका हमने font कम कर दिया. Yeah, so as and when you keep doing this, you will get an understanding कि font ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए, etc. And then you write your contact, or you write your email ID, and that's it. You're good to go. You have a good illustration, you have your two brand colors, you have your logo, and you have your text. So that's service based. Okay, one, you have an option. I don't get any options for homeopathy. Okay, that's a specific I was question. coming. That's a very specific. So not only homeopathy, but there could be various other
businesses which are these are very specific. Homeopathy is very specific. You might want to use this in text, but show visuals which are more medicinal and healthcare related. वो आपका broad segment हो सकता है. But आप keywords में use कर सकते हो homeopathy. आप शायद कोई visuals ऐसे use कर सकते हैं जिसमें homeopathy medicine लगे और allopathy ना लगे. वो आपको थोड़े से cues लेने पड़ेंगे क्योंकि ये काफी काफी वो है niche है. It's very very narrow Right. as a Somebody had just asked how to create a short video. I think short video is very relevant because you use a lot of short videos for reels. It's very important. So I'll just show you a very simple option for it. template. Yeah. So you have a lot of templates for videos also. Like I said, if you have to, if अगर आपको कोई particular, for example, skincare routine बनाना है, there are a lot of stock images, stock videos that you can use. Let me play this. सो यू कैन सी कि इसमें जो ऊपर वाली वीडियो है, जो नीचे वाली वीडियो है, इसमें फेस भी नहीं दिख रहा है, सो यू कांट रियली फिगर आउट, यू नो, इट्स वेरी सिंपल टू यूज एक्चुअली. And similarly, if you are a service based business also, you will have a lot of templates here. If you want to customize it, you can also customize the type of videos, right? So let's say you want to go to elements, you want to go to videos, you can actually see a lot of stock videos here also, and you can use those particular stock videos, right? So let's say I want to use this video to show how I am working in my office, so you can do that. Matlab, there are hundreds and thousands of videos that you can actually select from depending on your requirement. Like here you can just show the hands of this person who is working on a laptop, and that's it. You don't need anything more. So yeah. Swati, in the interest of time, can we move on to the next tool? Yes, we have to. We must. Um, Next tool is again, this is very important for all D2C businesses and in fact all retail businesses out there, which is Wati. Okay, so I'll tell you guys what is the importance of activating communication on your WhatsApp first, right? So let me just quickly give you one example. So you know how a lot of D2C businesses, like you can see example of Boat here. So isme na, this is the WhatsApp message that Boat sends, the one on your left, the one that you see in the center, right? Swati can't see your screen. Can't see my screen. Let me. Can you guys see it now? Can you see it now? Cannot see it yet. Okay, let me try again. See, it's still not getting shared. Okay, guys, I'm really sorry about this. Give me a minute. I hope you can see the screen now. Yes, we can see it now, finally. Okay, great. So yes, as you guys can see, if you see, this is a message that Boat sends to its customers on WhatsApp after you've placed an order. So this is an order confirmation message, right? So let's go through the message together. What does it say? It says that your Boat lifestyle order number something something has been dispatched. The package is shipping from here. Item includes one Boat extend talk delivering to this, and you can track your order via this link. Okay.
Now, what is wrong with this message and how can we make it better? Let's first talk about that and then we will move on to the importance of doing WhatsApp messaging for your business, no matter how small your business is. अगर आपने आज भी start किया है, then also it's very important to engage customers in your WhatsApp messaging, right? So if you look towards your right, this is what Wati can do or any other WhatsApp integration tool can do for you, right? There are many tools out there. There is Haptik also, lekin Wati is the best when it comes to integration with simple websites. Even if you don't have a website, you can integrate it with your just your WhatsApp business number. Cost wise, also काफी effective है for small businesses. The package starts from as low as 2000 rupees per month, जिसमें कि आप सारी customization कर सकते हो. And this is the kind of work that Wati can do for you, right? So number one, it can add an image. अगर let's say आपके brand का कोई अच्छा सा shoot है, आपको उस particular product की photo डालनी है, order confirmation message पे आप वो डाल सकते हो. You can add name of the particular person that you are addressing it to, the customer. Then you can actually confirm what is the product that is getting delivered. Then you can also say that this is your estimated delivery date, क्योंकि ये भी customize कर सकता है आपका WhatsApp chatbot. Then finally you can also give a button to track the order, or you can give a button to visit the website or shop again, etc. And this is also something that can be done with this particular tool. Now, why it's important and why are we going through this is because as an early business, पहले email marketing used to be something that is very important, but today what is very important that your business cannot do without is conversation on WhatsApp, right? And why is it important? Because all of us have WhatsApp, all of us are engaged on WhatsApp all day. It just helps to gain the trust of your customer, number one. क्योंकि अगर आपके customer को ये लगेगा that they have placed an order with you or they have placed a query with you, let's say you are a service based business, right? आपकी website पे किसी की query आई, तो imagine how much engaged that person will feel if immediately instantly they get a message on you on WhatsApp saying hi, thank you for putting in your query, we will get back to you, blah blah blah, in the meantime you can do this, you know. So there are many ways in which you can customize कि आपको WhatsApp पे क्या communication डालनी है according to your particular business, and what is relevant for your business, what is not relevant. And especially if you are a D2C business trying to sell something from your own website, then this is a must have tool for you guys. Before you set up any other thing, after you have set up your shipping and your payment, this is the third thing that you should set up, right? So let me show you what the tool can do. The tool can actually showcase your catalog on WhatsApp. So imagine if you are selling, let's say, home decor products, तो आप WhatsApp पे ही अपना catalog डाल सकते हो. जरूरी नहीं है कि आपको website बनानी पड़ेगी. Let's say you don't want to put in the budget or you don't want to put in the money to make a website. So you can show your products स्वाति, on अगर आप ऑडियंस के लिए डिकोड कर पाएंगे, सॉरी टू इंटरवीन, अगर आप ऑडियंस के लिए डिकोड कर पाएंगे कि व्हाट्सएप बिजनेस और वाटी में क्या फर्क है और कौन से बिजनेस को व्हाट्सएप बिजनेस पे ही रहना चाहिए और वाटी के लिए, बिकॉज एक फ्री प्लेटफॉर्म है और ये पेड प्लेटफॉर्म है, तो पेड में जाने के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए एक बिजनेस का या एक मिनिमम बिजनेस प्रोपोजिशन होना चाहिए? जैसे D2C बिजनेस में बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस होती हैं, तो उसमें वाटी इज ओके। अगर किसी का रिटेल बिजनेस है तो क्या उसे व्हाट्सएप बिजनेस में ही रहना चाहिए या वाटी करना चाहिए, वाटी अडॉप्ट करना चाहिए? श्योर. सो अगर आपका बिजनेस इस स्केल पे है दैट यू आर नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज, या अगर आपका ऑनलाइन क्वेरीज लाने का बिजनेस नहीं है, तो आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे ही रहना चाहिए. द ओनली रीजन वाई यू शुड गो टू अ प्लेटफॉर्म लाइक वाटी एंड you should invest in it is when you want to automate your messages and if you want to personalize your messages. जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यूज करते हैं और अगर मैं आपकी यूजर हूँ, मैंने आपके व्हाट्सएप के ऊपर कहीं से मैसेज करा आपके नंबर के ऊपर, राइट? तो आप सर्टेन टेम्पलेट्स डाल सकते हो उसमें, हाय थैंक यू फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, वी विल गेट बैक टू यू, हाय हाउ कैन वी हेल्प यू, यू नो, इस टाइप के मैसेजेस. लेकिन बहुत बार ना ये चैटबॉट टाइप के मैसेजेस से ना पीपल फील कि यार दिस इज नॉट अ रियल पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी. Tools like Wati is a chatbot. It will talk to you from an AI point of view. आपका नाम लेके बात करेगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेरी है तो उस आपकी पर्टिकुलर क्वेरी के बारे में वो जवाब देगा. एंड द बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू हायर एन एक्सपर्ट टू डू इट. बहुत केसेस में अगर आपके पास एज अ बिजनेस क्वेरीज आती है तो आपको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रखना पड़ता है, या फिर आपने देखा होगा देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आउटसोर्स इट, अपना कस्टमर सर्विस आउटसोर्स कर देते हैं.
right? But if even if you are in a surface industry, it makes sense to invest in a tool like this at an early stage, because it will really help you to understand what are the kind of questions that your customers are asking. In fact, a tool like Vati will also analyze your messages. Okay, so इसलिए my answer to Supriya's question is that if you are a very early stage startup जहाँ पे आपका भी operation setup हो रहे हैं, and you want to reply to all your customers on your own, अगर आप physically खुद reply करना चाहते हो, आपके पास time है और आपके पास queries कम आती हैं, तो आप वो WhatsApp business पे support दे सकते हो. But if you want a chatbot to engage with your queries, आप चाहते हो कि आपको कोई भी मैसेज आ रहा है कहीं से तो आप उसको immediately respond कर सको, then it's important that you can invest in a tool like this, right? So for example, there are many other things that a tool like Vati can give that you will not get for free on WhatsApp business, which is that people can buy from your catalog on WhatsApp only. देन आपको अगर कोई भी ऑर्डर कंफर्मेशन या बिलिंग वगैरह का मैसेज जाना होता है तो आप वो ईमेल सीआरएम सेटअप कर सकते हो, लेकिन इफ यू सेटअप इट ऑन व्हाट्सएप देन यू डोंट इवन नीड टू सेट इट अप ऑन ईमेल सीआरएम, क्योंकि उसमें भी आपको अल्टीमेटली पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे टू सेटअप एन ईमेल मार्केटिंग टूल, राइट? अगर आपका इनफैक्ट लाइक आई जस्ट मेंशन, इट कैन ऑटोमेट कस्टमर सपोर्ट फॉर यू. जरूरी नहीं है कि आप इफ यू हैव अ सपोर्ट टीम इंटरनली, दे कैन फोकस ऑन द मोर इम्पोर्टेंट क्वेरीज. जैसे कि ना बहुत सारे, मैं बहुत टिपिकल एग्जांपल देती हूँ. इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, on every product you will see there are so many comments where people are saying pp is price please, right? So many D2C small time product startups, they are so fed up of this pp कि यार ये मैं कितने pp का जवाब दूं. So this will solve that pp problem for you. Anyone who is asking pp means you can add it in the bot कि यार अगर कोई pp बोले, that means they are asking for the price, please tell them the price of this product, right? So you can automate a lot of that manual labor or manual effort that might not be so productive, and you can focus on the other more productive sides of your business. Similarly, you can actually आपको ये भी बता सकता है कि let's say अगर last 6 महीने में आपसे 100 लोगों ने खरीदा and all 100 of them you have their data stored on WhatsApp, तो उन 100 में से कौन से रिपीट कस्टमर्स हैं आपके, कौन से न्यू कस्टमर्स हैं, कौन बार बार ज्यादा क्वेरी पूछते हैं, उस सब का डेटा आपको मिल जाएगा ताकि आप अकॉर्डिंगली उनको ऑफर्स दे पाओ. फॉर एग्जांपल, राइट, एज अ स्मॉल बिजनेस हम इन चीजों के बारे में सोचते नहीं है, लेकिन आपको अपने कस्टमर्स रिटेन करने के लिए, टू कीप them coming back, it's important that you think about this from day one, that how will you make a customer come back to you or to buy a product, right? So tools like this can help in retaining your customers also. Swati, and for the audience in general, can we move on to the next and the last, the most hyped tool, which is chat GPT? Before that, आप सबके लिए मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है चैट में, जहां आप वाटी के बारे में थोड़ा और जान सकते हैं, और वहां आपको ये भी पता लगेगा कि उसके बेनिफिट्स क्या है. जैसे स्वाति ने बोला कि अगर आप एक अर्ली स्टेज स्टार्टअप है जो क्वेरीज मैन्युअली आंसर कर सकते हैं, तब के लिए आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज करें. वो एक फ्री टूल है जिसमें भी कैटलॉग बन सकता है, पर जो शॉप करने वाला जो उसकी पेमेंट गेटवेज है, शॉप करने वाला है, वो आपके वाटी से लिंक्ड होगा. वाटी मल्टीपल कॉन्वर्जेशंस में हेल्प होता है. तो अगर आपको कभी मेक माई ट्रिप या जोमेटो या स्विगी या नायका, ये सारे D2C प्लेटफॉर्म से जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑटोमेटिक मैसेज आता है, थैंक यू फॉर प्लेसिंग योर ऑर्डर, इट विल बी शिप्ड बाय सो एंड सो डेट. वो लोग ये प्लेटफॉर्म्स को ज्यादा यूज करते हैं. पर आपके लिए, अगर आपका D2C बिजनेस नहीं है और सिर्फ क्वेरीज जनरेट करने के लिए है या थोड़े बहुत कॉन्वर्जेशंस के लिए है, लीड लेके जाने के लिए, तो आपको पहले व्हाट्सएप पर बिजनेस पे इतने लीड्स आने चाहिए सो दैट आप उसको ऑटोमेट करने के लिए वाटी पे लेकर जाइए, क्योंकि वाटी पे there is going to be a cost plus there will be a conversation charge. So for more details आप वाटी की साइट पे देख सकते हैं, क्योंकि आपको पर कॉन्वर्जेशन के लिए भी चार्ज होएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. तो उसकी प्राइसिंग डिटेल्स आप जाके जरूर देखिए. पर अगर आपके बहुत सारे कॉन्वर्जेशन होते हैं, तकरीबन 5 से 10,000 कॉन्वर्जेशन अपने कस्टमर्स के साथ, तो आप वाटी पे शिफ्ट कर सकते हैं. अगर आपके 1000 से कम कॉन्वर्जेशन है महीने में with your customers, potential buyers, queries, तो आप धीरे धीरे उस पे वीन आउट करके वाटी पे मूव कर सकते हैं. बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट for you to figure out at what stage your business is to pick up the relevant tool.
I hope, Swati, I was able to summarize Yes, the yes, Wati and WhatsApp conversation. perfectly fine. Yes, thank you so much. Let's move on to chat GPT, and we apologies, the session was till 1:30 for all the participants. We'll request you to stay on for another 10 minutes till we wrap up the next and the most relevant in today's time, and demystify what this all is about. And towards the end of the session, we will be sharing the links of the session and how can you get in touch with the speaker in this case as well. So back to you, Swati. Thank you. Just adding it for anyone who is because there are a lot of queries about healthcare, edtech, and customer support, etc. So you can see on screen that there are also specific solutions for it. We just saw an example for the Vati e-commerce, लेकिन बाकी सारे kind of services के लिए भी, if you are a service-based business, उसके लिए भी chatbot है. And yes, it can answer to specific questions also. आप उसमें input डाल सकते हो and it can answer to specific questions also. Now let's move on to the next tool for us, which is our beloved ChatGPT. So, how many of you have tried ChatGPT? I just want to start by asking that how many of you have you tried, and if you Can can we just have yes three on words. the chat? Yes, and if you can just tell us in 2 to 3 words that for what did you try it for? I mean, did you try it for work or just for fun? Did you find it useful? थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी so that I can kind of steer the conversation in that direction. Work and assignments, okay, great. Writing job description, write an email, social media content, great. So you guys are already using it for a lot of fun stuff, for a lot of uh, saving a lot of time there. Working for SOP draft, great. Information gathering, great. For blogs, awesome. You're also writing blogs on ChatGPT. That's brilliant. So yes, that's exactly what we as small businesses and as early startups can actually use ChatGPT for. You guys got it bang on. It can not just answer a lot of your normal questions, like you also might have a lot of questions. For example, I mean, I know that we just feel that in a lot of cases, ChatGPT can will eat our jobs, for example. People are very scared, but aisa kuch nahi hai. There are a lot of things that an AI tool like ChatGPT can still not do, but real people like us can do. So don't worry about it. And you can, okay, so let's start with the most relevant question here. Okay, so I think the one most asked question here was how to make a social media strategy. Let's ask that question from ChatGPT and let's see what kind of answer it gives. Okay, I'm not sure how many of you actually have tried to do it, but if you actually ask it your question, I hope it's not down because a lot of days these days, yes, it says it's experiencing high demand. Let's hope for the best. Okay, let's see what it says. It says how to create a social media strategy, define your goals, know your audience, choose your social media platforms, develop your content strategy, determine what type of content you will create, and determine your posting schedule. Great. So it has told you 3 very important things, which is first of all, understand your target audience, define your goals, what you want to do with it, कौन से social media platforms आप use करना चाहते हो, how will you develop your content strategy, what determine your posting schedule, again very important कि आप कब कितने often post करना चाहते हो, किस time पे post करना चाहते हो, monitor and measure your results. So essentially ChatGPT is a tool that will crawl data that is already available on the web and it will create meaningful answers that are relevant to your question. What does that mean is कि हो सकता है ये जो information इसने दी है वो 4 अलग-अलग जगह पे हो on the internet or it has been fed into the tool, but it will collate it and make sense of it, make it into a structured sentence, and then tell you so that you can understand it better. Okay, now let's ask some more specific questions and let's see if it can help us with
dealing with our concerns. Okay, so let's ask it that what kind of social media posts do I make as a healthcare service provider, right? Since people have questions on healthcare industry. So let's see what kind of answers it's giving. So this is basically making content pillars for you. You know, essentially, you would have to hire a copywriter या content writer. आपको hire करना होता है, आपको कोई agency hire करनी होती है पूछने के लिए कि यार what should I make that will engage my target audience, right? I am a healthcare service provider, right? So let's see what kind of answers it is giving. हेल्थ एंड वेलनेस टिप्स वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी है. अगर आप चाहते हो कि आपके हेल्थ केयर सर्विस के पेज को लोग फॉलो करें, व्हाट इज द टॉप थिंग दैट यू कैन डू? You can provide information to them. Then you can actually provide disease prevention tips. You can give patient success stories. ऐसे करके बहुत सारी in expert insights, community events, get them to meet with doctors and other healthcare providers, right? So again, very relevant things. These are all things that you can talk about in your posts. Somebody is saying, I think Quora is better than Chat GPT. You know, Quora, I agree, is a gold mine of information, but unfortunately, a lot of content that is going on Quora is actually fed by brands, right? So I'll give you an example. Let's say there is a brand that has a great marketing budget. What they will do is they will actually hire a lot of Quora writers who will seed a lot of information about their brand on Quora. तो जहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछते हो who is the best healthcare service provider, तो जिस healthcare service provider ने बहुत सारे लोगों को sponsor किया होगा, they will start answering the question that Swati Health Services is the best healthcare provider, और आपको answers में वही दिखेगा. So I would say that it's kind of biased, whereas a tool like ChatGPT cannot be biased. Yes, it cannot always give you 100% correct information. Please do not rely it for taking any healthcare your own health tips or taking any legal tips, etc., because it cannot 100% be accurate. It is just collating information. But day to day content समझने के लिए, day to day information के लिए, this is very helpful. It comes in really handy. Especially it saves a lot of time, because sometimes we don't even have time to go through a lot of articles on Google. ऐसे तो आप Google पे भी सर्च करके बहुत सारी information निकाल सकते हो, but sometimes we don't have the time to go and interpret what Google articles are trying to tell us, right? So you can do this, and obviously you can answer mail queries. You can answer any email that your client is asking from you. Obviously a lot of us have troubles in writing great content, because हम सब copywriters नहीं होते हैं. हमें पता तो होता है क्या बोलना है, पर अच्छा sentence form करना नहीं आता. So that is where you can use this tool. And can you guys give an example of what you would want to ask? मतलब just top of your mind, दो तीन examples देते हैं. Let's ask and let's see if it is giving relevant answers. Yes, quickly. Then we'll wrap this up and we'll move on to Q&A. How to build a founder's cult? Wow, that's a very powerful question, Shivam. Anyone else, guys? What kind of questions would you want to ask? And let's see if the tool is able to give satisfactory answers. What is the most sought after digital marketing campaign? Great. What kind of content mature audiences like on social media? Okay, you will have to be a little more specific, Prabal. Maybe you can say what type of content engages this particular, yes, 30 to 35. Okay, great. Let's ask that question. What content on social media engages Indians aged 30 to 35 years? Okay. May vary based on their interest and needs, but here are some general ideas. So obviously, since we have not defined which category, so it is giving generic ideas. Okay. News, current events, lifestyle and hobbies. Many people have interest in travel, fitness, etc. Again, this is a very generic answer. So इसलिए you will have to ask more specific questions. अगर आप चाहते हो कि आपके particular business के लिए आपको answer मिले, then you have to say which category.
right? Let's say if you are a travel agency, create LinkedIn post for the vacancy of a social media manager. Of course, I think it can do that as well. I think a lot of people have written job descriptions here using ChatGPT, so that can be done. I think a very interesting question that we got here was how to build a founder's cult. So let's just ask that and then wrap it up with this last question. Okay, I think cult was a wrong term to use because it actually, things that we are asking to build like a political sort of a cult. So, okay, I think community is a better question. How to build a startup founders community. Let's wrap it up after this. Guys, does anyone have any particular questions on ChatGPT? Because honestly, it will take a lot of trial and error to see what kind of questions it is answering and what it is not answering. But I think three important headlines I will just summarize how we can use it is: number one, create content for your social media channels. You can use Canva to make images, and you can chat GPT to write captions, and you can schedule it using Meta. So all of your work is actually being done by tools. You don't really have to write anything in particular. You just have to manage, use these tools and schedule your content. So that's where it will come in very handy. I'll just stop it now. Then number two is when you have a lot of queries to answer and somehow you cannot find the right words to answer. So it will help you frame sentences, frame emails in a better, in a more engaging way. In how you can actually capture that lead also. आप exactly पूछ सकते हो that give me an answer to this particular email. In fact, in a lot of cases, you can also copy paste the content of the email and it will give you a relevant answer. And the third and the most important thing is you can actually ask any other kind of questions also, right? So जरूरी नहीं है कि आपको content ही लिखना है, but if you have any other particular question. So for example, I found this very interesting. Somebody has recently on Valentine's Day, a friend of mine asked it to give an example of a proposal message for a girl. तो वो भी दे दिया गया है. You know, it's actually very interesting. But like I said, do not rely it on for making any important decisions like financial decisions or legal decisions or health related decisions. Otherwise, in a day to day, I think it has made our lives very easy. So we should definitely make complete use of it.